सो टुडेज टॉपिक इज ड्यूरेशन। यहाँ पर एक अच्छा लिंक है, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, प्लीज फोकस ऑन दिस। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है विथ एग्जांपल, फिर हम लोग ड्यूरेशन, मैक्युलर ड्यूरेशन प्रूव भी करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे पूरा। सो व्हाट इज ड्यूरेशन? बॉन्ड ड्यूरेशन इज अ टूल used by investors to measure how bond prices change with the interest rate. See, you know, interest rate का मतलब है market rate, market में जो interest rate चल रहा है, not the coupon. Okay, so you clearly know whenever there is a increment in the yield to maturity, अगर वो आप maturity तक hold करते हो तो yield to maturity. If not, you are holding till maturity, let us assume market rate or interest rates in the market. See, coupon rate is what company has promised. Interest rate is nothing but what is prevailing in the market. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन होता है, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है. दिस रिलेशनशिप इज वेरी क्लियर. सो ड्यूरेशन इज व्हाट इट मेजर्स, इट्स अ टूल टू मेजर how the bond prices change with interest rate. That means how is it happening, ये क्यों हो रहा है. Okay, so let's see how it happens and see the reasoning behind this. So the reasoning behind this relationship is very simple. जैसे ही interest rate ऊपर जाएगा, companies will issue new bonds with a higher interest rate, with a higher coupon. Correct? For example, an issuer who issued 5% coupon bond in the past, now the interest rates have gone up, so now issues a similar bond. The same company is issuing a similar bond with 6% coupon due to high interest rate in the market. This means that the old bonds with 5% coupons are now less attractive to buyers. So to compensate for smaller coupons, अब आपका कूपन कम है, जो बॉन्ड होल्डर्स के पास ओल्ड बॉन्ड है उसका कूपन कम है, एंड कंपनी हैज issued a fresh bond with a higher coupon rate because the market में जो ट्रेंड चल रहा है वो 6% का चल रहा है. Now bond holders, if they want to sell their bonds, they will reduce the price. Okay, bond holders have to reduce the price of the bonds with 5% coupon. Why are they reducing the price? क्योंकि सामने वाले को वो सस्ते में मिलेगा तो ही वो खरीदेगा, because of the demand supply game, you know that. Consequently, an increase in the interest rate leads bond prices to fall. We know this relationship. By same principle, when interest rate goes down, old bonds become more attractive and as a result more valuable, vice versa. So now the next question investors need to answer is how much the bond price would move when the interest rate changes. यानी अगर interest rate 1% से बढ़ता है, Shivang, you asked me a question day before yesterday. Sorry, there is a correction in that. There was 1000 basis points they used. No, 100 basis points means 1%. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah, Shivang, a small correction day before yesterday. Maybe I was in some like haste or rush. तो मैंने उसको गौर नहीं किया. 100 basis points is 1%. ठीक है ना? So if the interest rates go up by 1%, how much the bond price is going to decline? If the interest rate is going down by 1%, how much the bond price is going to go up? ये how much वाला जो question है ना, how much, that can be answered with this called duration, right? Okay. अब अगर मैं ऐसा बोलूं तो डेल्टा P by डेल्टा YTM यानी और डेल्टा interest rate, that means how the bond price responds to change in interest rates. You know the concept of elasticity. So the change in bond price with respect to change in interest rates is shown or given by duration. That's it. As simple as that. मतलब अगर आपका बॉन्ड, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ेगा या 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड प्राइस कितना और कितना डिक्लाइन होगा, ये हमें देखना है. Let's go ahead now. So the next question investors need to answer is how much the bond price would move when the interest rate changes. यानी मेरा 100 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो मेरा बॉन्ड प्राइस कितना नीचे जाएगा, कितने डॉलर से डिक्लाइन करेगा, और अगर मेरा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस कितने डॉलर से इंक्रीज होगा.
So interest rate decline, bond price increase, but with how many dollars? 100 basis points niche interest rate, how many dollars? The bond price is up. 100 basis points interest rate down, like up or down, respective changes in the bond price by how many dollars? That is what we're going to see. Now, duration gives investors the tool to precisely measure potential changes in bond price from interest rate fluctuation. यानी interest rate fluctuation होता है, ठीक है ना? तो duration आपको help करेगा, और this is the tool which with the help of which you can see the potential changes in the bond price. यानी आपको और भी clarity मिलेगा as we move forward. Please focus. With duration, investors can measure the interest rate risk. मैं आपके सामने एक word लिख रहा हूं, sensitivity and interest rate risk. See, sensitivity का concept is very simple. As there is a climate change, our body is sensitive to climate change. यानी अगर थोड़ा सा गर्मी हो जाता है तो हमारा हमको स्ट्रोक लगता है, थोड़ा सा लाइक ठंडी हो जाता है तो हमारे को सर्दी हो जाती है. So how the human body responds to changes in climate change, in the same way how bond price responds to changes in interest rate. That is what you are going to see. And interest rate risk, definitely, if you have taken a bond which was paying you 5% coupon, market में अचानक से 3% हो जाता है, sorry, market में 7% हो जाता है, तो what will you think? कि ये 5% तो बेकार है मेरे लिए. Why should not I shift to 7%? Because the company in which I have invested is giving me only 5%. So is that a interest rate risk? Because interest rates are not stable. Are you following what I mean to say? Interest rates are not Yes, sir. stable. Yeah. तो interest rates तो बढ़ता कम होता रहेगा, वहां रिस्क है. तो दैट इज व्हाट. अच्छा, अब आप क्या करोगे? आप फिक्स रेट बॉन्ड्स लोगे तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि कंपनी अगर 7% फिक्स रख के चलती है एंड मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हो गया 10%, तो भी आपको इतना ही मिलेगा. हाँ, यू विल बी हैप्पी इफ इट गोज टू 4% बिकॉज यू विल गेट 7%. But getting a fixed rate interest bond is not always easy. Most of the companies will go with the market rates. So ये सब issues आपको देखना है being a bond investor. Okay, you will come across all these issues being a bond investor. Natural, you have to see for all this, and you have to select bonds whereby you find less interest rate risk. Okay, so that less interest rate risk is kind of gauged by duration. यानी duration आपको बताएगा कौन सा बॉन्ड आपको लेना है जिसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कौन सा बॉन्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा, वो आपको स्किप करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ. चलो, सो नाउ वेरी सिंपली you'll understand. अब ये स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा. With duration, investors can measure the interest rate risk they are taking and compare the interest exposure for different bonds. So आपके पास बॉन्ड A है, बॉन्ड B है, ये ज्यादा रिस्की है या ये ज्यादा रिस्की है? How will you decide the interest rate risk in these two bonds and decide which one you need to take based upon your risk like appetite? अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हो, you'll go for risky bond. If you are a risk averse investor, you'll go for a bond which is less risky. So how will you decide the riskiness in the bond or the interest rate risk in the bond? With the help of duration. That is the tool which will help you to measure that interest rate risk. Okay, so basically एक बात बताता हूं, जिस बॉन्ड का ड्यूरेशन ज्यादा है, suppose this particular bond's duration is, suppose I'm speaking about maculate. There are two types of duration. चलो मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं इसका. One is maculate duration, one is modified duration. अभी आपको एक approximate modified duration भी आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. So maculate duration is measured in terms of years. Modified duration is measured in terms of percentage. So अभी what maculate duration says is, जिस bond का duration ज्यादा रहेगा, suppose if this is 5-year bond, this is a 10-year bond, which one you think has more interest rate risk or more sensitive to interest rate risk? Please tell me. Which has less years. What? Which is having maturity less years. No, which is having a higher maturity is the one which is more sensitive to interest rate risk, because in longer period
many things can happen. See, ये बॉन्ड आपको Okay. 5 years में पैसा दे देगा, करेक्ट और रॉन्ग? Mm-hmm. इसके ऊपर तो आपको मनी 5 years में आ जाएगा ना, एंड वो मनी आने के बाद आप उसको फिर इन्वेस्ट कर सकते हो. इसमें आपको 10 years Okay. तक वेट करना पड़ेगा. कंपनी अगर लॉसेस में आ गया तो कंपनी आपको पैसा देगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है. इन्फ्लेशन मार्केट में क्रॉप अप होता रहेगा, रिसेशन आ सकता है मार्केट में, कोविड सिनेरियो आ गया, क्या कर लोगे? दिस इज Yeah. मोर प्रोन टू रिस्क. सो हायर द ड्यूरेशन द मोर द रिस्क, करेक्ट? Okay. The more the sensitive the bond is towards risk, and the more returns you expect in such kind of bonds. Because सर अभी एक छोटा एग्जांपल, मैं आपको 10 लाख रुपीस दिया, मैं बोला आप मेरे को 1 ईयर में दे दो, एंड दूसरे कंडीशन में मैं आपको 10 लाख रुपीस दिया और बोला कि 10 इयर्स में दे दो, मेरे को रिस्क किस में है? Yeah. 10 years का risk. 10 इयर्स में आपका कंडीशन क्या? फॉर एग्जांपल कोई आपका हाँ, लॉस होता है, नॉट आई विल नेवर लाइक एक्सपेक्ट दैट टू हैपन एनी टाइम. आई ऑलवेज लाइक विश गुड टू यू. अगर कुछ हो जाता है बिजनेस में, भाई अप्स एंड डाउन चलता रहता है, सो कुछ हो जाता है तो मेरा पैसा तो डूब सकता है ना. 1 ईयर के अंदर में मेरे को पैसा आने का उम्मीद है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस. दैट इज व्हाट इज ड्यूरेशन ऑल अबाउट. अब देखिए, there are two duration concepts that look at interest rate sensitivity from different angles. The first one थी, आप टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत सिंपल समझाया हुआ है. So there are two duration concepts that look at interest rate sensitivity from different angles: the macular duration and the modified duration. Some investors use the terms interchangeably, but नहीं, दोनों में difference है. It is always good to be clear if you are thinking and terminology. आप जो सोचते हो वो रहना जरूरी नहीं है. सी देयर इज अ फॉर्मूला. दोनों को मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ रेशियोज के ऊपर. शुड आई सेंड यू क्वेश्चन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेवरेज रेशियो और इक्विटी मल्टीप्लायर? व्हाट इज द फॉर्मूला? Net income by fixed assets, average total No. assets. Average total assets by average total equity, maybe. Yes, average total assets by average total equity. Yes. The assets which you are financing with your equity, correct? Equity. Yeah, yeah. हाँ. Yeah. तो ये मतलब तो हो क्या रहा है कि आप इसको इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं. फाइन. तो Yeah. मतलब स्टूडेंट्स क्या है, लाइक डेट से भी मतलब आप फाइनेंस कर सकते हो अपने एसेट को, इक्विटी से भी कर सकते हो. आपको डेट में आपको लेवरेज है, इक्विटी में लेवरेज नहीं है. बट हियर व्हाट यू आर सेइंग, द अल्टीमेट एम फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, अगर इक्विटी से आप एसेट्स को फाइनेंस कर रहे हो तो बचा हुआ डेट से करोगे. ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू से इन दिस. तो अभी so what you think is not always the one which is in reality. So let's go ahead. Both duration concepts, ठीक है, they both the duration, whether the maculate duration or modified duration, are useful and shed different lights on interest rate exposures. Let's say what kind of terminology they use to tell you about the interest rate risk. The math behind duration can be daunting but not, ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए, आगे जाते हैं. So macular duration, when the interest rate changes, bonds with longer maturities experience more price movements than short-term bonds. Did I say the same thing? Yeah. So अगर interest rate change होता है तो जो bond जिसका maturity long term मतलब longer period का है, उसमें आपको ज्यादा price movements या ज्यादा risk देखने को मिलेगा when compared to short-term bonds, because short-term bonds mature quickly. They don't wait for those moments to they won't, there's nothing like you'll be experiencing more moments in short term bonds because it will mature quickly. So when they mature, investors can reinvest the money in new bonds at the current interest rate, correct? See, for this bond you need to wait for 10 years for the same interest rate of 5%, but this bond you will be, it will be maturing in 5 years, and suppose the rate at which you took was 5%, but after 5 years the rate has gone to 8%. So again you can enjoy 8% if you reinvest, correct or wrong? Yes. Yes. So are you experiencing any interest rate risk here? No. Here the same rate is still continuing. Well, in fact in the market the rates are 8%. So you think ना कि भाई मैं यहाँ फंस गया, यहाँ पर रिस्क है, मेरे को बेकार हो गया ये. That's what. So
like, so when the interest rate changes, long term bond holders will feel the impact. Acha, where was I? Sorry. Huh. So when they mature, investors can reinvest the money in new bonds at the current interest rate. Thus, they offer more flexibility to adjust to changing interest rates. That means जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको आ रहा है, आप रीइन्वेस्ट कर रहे हो, कम आ रहा है नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क कम हो गया ना. बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में यू आर वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू आर वेटिंग टिल मेच्योरिटी. नाउ ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लॉक इन इन्वेस्टर कैपिटल. सी, अगर आप पीपीएफ में पैसा डालो, 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है. आप यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में पैसे डालो, 10 इयर्स का लॉकअप है. wherever there is lockup, what is happening to people right now? Pandemic आया, अब उसको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए. they cannot withdraw money from these accounts because आप कॉन्ट्रैक्ट में, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, यू आर बाउंड. तो क्या हो रहा है, रिस्क है ना अभी. यू कैनॉट गेट योर मनी बैक immediately. Yeah. So the only way, they can only reinvest at the current interest rate. Okay, fine, ये तो हो गया, ठीक है. So as a result, the price of bonds with longer maturities is more heavily affected by the interest rate than the short-term bonds. This intuition shows that the sensitivity of the bond price to interest rate changes must be related to the length of the bond. ये है उसके पीछे intuition कि अगर आपको bond का sensitivity, यानी the bonds like what we say, bonds, what is sensitivity, what I said about sensitivity, हमारा जो human body है, it is more prone to climate change. So how sensitive is the bond price towards the interest rate change? That is what you are trying to know with the help of maculae duration, and that is explained you with the length of the bond. Got my point? That is explained you with the maturity of the bond. यानी जितना लॉन्ग मेच्योरिटी रहेगा उतना रिस्की, जितना कम मेच्योरिटी रहेगा उतना लेस रिस्की. फाइन, दैट्स व्हाट. So this intuition shows that sensitivity of the bond price to interest rate changes must be related to the length of the bond. But what exactly is the length of the bond and how to measure it? It turns out the best way to estimate a bond's length is by see, this I'll do it for you, don't worry. So now let's see the conclusion. What is it formula? No, I'll do it. ये आपको नहीं करना है. Okay. We'll do a very good question right now. हम समझ लेंगे, ठीक है? So the maculae duration calculates the weighted average time to receive all future payments of the bond. मतलब क्या है? See, you want to put your money in a bond, correct? आप एक bond buy कर रहे हो. You are buying a bond. Suppose you are buying a bond for $800. So definitely on maturity you'll get how much? So ये जो आपको ये जो $1,000 मिल रहा है, $800 इन्वेस्ट करने में, ये आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट है, करेक्ट? यही आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट है ना बॉस? ये कितने इयर्स में आपको मिल रहा है? दैट इज ड्यूरेशन. जितना जल्दी मिलेगा उतना कम रिस्क है, जितना लेट मिलेगा उतना ज्यादा रिस्क है. दैट्स इट. So the maculae duration calculates the weighted average time to receive all future payments of the bond. Did I say the same thing? ये पूरा का पूरा आपका पैसा आपको आएगा फ्यूचर में, करेक्ट? ये आएगा ना आपको? Yes. But not only this, please remember in the first class we discussed you will be getting coupon also. Yeah. So this coupon also you will be reinvesting. And again ये पूरे reinvestments करके ये भी आएगा, कूपन के ऊपर जो पैसा आपको मिलना है वो भी आएगा. वो सब मिला के आपको कितने इयर्स में आएगा, दैट इज व्हाट यू आर चेकिंग हियर. ओके, नाउ सो the formula gives more weight to larger present values and discount smaller, ठीक है? Because this variable measures weighted length of the bond, the maculae duration is measured in years. तो अब लास्ट एंड कंक्लूजन पॉइंट के बाद we'll do a question. The maculae duration is a precise measure that shows you effective interest rate exposure of a bond. This calculation applies to any bond and allows the investors to compare their interest rate sensitivities. Bonds with longer maculae duration are more sensitive to interest rate changes. That means you have a higher risk.
higher interest rate risk. Fine. Maculae, duration, bond with higher duration. We can use the word called larger duration. मतलब जो lengthy, if the length is like if it's a lengthy bond, if it is for more years, okay. So bonds with longer duration are more sensitive to interest rate risk and vice versa. Let's do a question now. Shall we go ahead with the question? Okay. Yes, sir. Yeah, let's do it. Chaliye. So now let's see. I'll write the statement here. Duration. So duration is the time frame within which you will achieve the targeted cash flow of the bond. Okay. Now let's see a question regarding this. Suppose if you take a 5-year bond. Okay, my example. So what is this targeted cash flow? If I have to ask you a question, what is this targeted cash flow? I want to say the Yeah, interest or coupons which we are expecting. Yeah, that means whatever you have invested, you'll get it. Apart from that, whatever the interest you are getting on that, that means whatever the coupon you're getting, that you're reinvesting, and that even gives you some return, correct? So I'll write about the targeted cash flows. So sum total of the cash flows which the bond is expected to generate. Okay. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. We will take a bond and will calculate the Macaulay duration. आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना. Now, example. So I'm taking a bond. 5-year is the promised period within which the bond will mature. 10% is the coupon. Okay, it's a 10% coupon bond, right? So now the bond has got a life of how many years? 5 years, and it has a coupon of 10%. And we will now, what we presume here, we presume the face value to be 100, let's say 100 rupees. Okay. Now for how many years you will get the coupon? You will get the coupon for how many years? 5 years. 5 years. हाँ, तो अब 5 years में कितना कूपन आएगा आपको? 5 into 10, 50 rupees का कूपन आ जाएगा. Okay. And at the end of the 50th year, you will receive what? Principal amount. Okay. So the bond will give a total cash flow of 150 rupees. Total cash flow. Fine. Over a period of 5 years. So that is the targeted cash flow. So what is your target cash flow here? 150 rupees. So now let's put it in the definition. So हम लोग duration का definition में क्या बताए थे? कि duration is the time frame in which the targeted cash flow is achieved. And now we know the target cash flow is 150 here. So now what we will do here,
We will take some example and first we'll calculate the duration in the mechanical way and see what is the answer we are getting. Let's go ahead. So now here 1, 2, 3, 4, 5. Cash flows 10, 10, 10, 10, 10. See this coupon also you reinvest. Okay. So since you because you get the first coupon, you reinvest it. You get the second coupon, you reinvest it, and you expect some value in the future. And that's the reason why we are discounting them. So we are discounting them. For example, the rate in the market is 12%. You won't discount anytime on the coupon rate, what the company has promised, but you always discount at the market rate. So 0.8928, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674. These are the discount factors. So let's see the discounted cash flow. 8.928, 7.972, 7.118. Let me take this as 110 because in the last year I'm going to get my principal also. Fine. So this 110 into 0.5674 is 62.414. Now, this is what you got. Acha, now what you need to do? You need to find out the proportion. See, weighted average. We are finding out the weighted average. अगर आपका textbook देखो, आपके textbook में देखो क्या रहेगा Maculus duration. Are they finding out the weights here? Please tell me. Just a second. Yeah. Yeah, they are finding out the weights, na? Yes. Yes. Yeah. So now we will do this like total 92.787 है ये आपका बॉन्ड. यानी आप इतना पे करोगे आपको मैच्योरिटी पे $100 मिलने के लिए. Proportion. So proportion is nothing but 8.928 divided by 92.787. 7.972 divided by 92.787. So you'll get the proportions. That means इतना पैसा आपका आ चुका है अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में. ओके. इतना परसेंट आ चुका है. इतना परसेंट. And the sum total is 1. Okay. Now, time weighted. So you'll be multiplying this particular weights with the time. Okay. Because this is time weighted average. What did we discuss? How much time it takes for you to recover the expected amount. Correct. So but we will get that in some years. Here what we are doing is we are finding out the weighted average of the time period. What we are finding out? Weighted average time. See, मैं एक term लिखता हूँ. Weighted average time to maturity. Fine. Weighted average time to maturity is duration. बस ये एक simple point. No. So आपका क्या हो जाएगा 0.096. Yeah, we will multiply this with the time. एग्जाम में आएगा तो ये करना है आपको. बस इंट्यूशन ये है कि जिसका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा वो ज्यादा रिस्की है. दैट्स इट. Now let's find out the answer. Acha, have you followed this completely? Yeah. Okay. तो ये पूरा मिला के आपका 110. आपका टारगेटेड कैश फ्लो क्या है यहाँ पर? 150 है आपका टारगेटेड कैश फ्लो. योर टारगेटेड कैश फ्लो इज दिस ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. करेक्ट. 1 2 3 4 10 आपको 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज तो मिल ही रहा है. 150 आपका टारगेटेड कैश फ्लो है. ये चाहिए आपको. ठीक है. चलिए.
So what is the duration here? कितना आ गया आपको ड्यूरेशन? 4.136 क्या? हाँ, this is your duration. अच्छा, यानी that 4.136 the duration. ड्यूरेशन, इतना टाइम आपको लगेगा आपका टारगेटेड अमाउंट या आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट रिसीव करने के लिए. आपको मेच्योरिटी उसने 5 इयर्स का दिया, बट आपको मिल गया कितने में? वो 4.136 में. इज इट नेसेसरी कि आपको 5 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, आपको तो 4.136 में आपका टारगेटेड अमाउंट मिल जा रहा है. I will prove you. Okay. Don't worry. First you understand the concept. I will prove you the second point also. यहाँ तक clear? This time weighted का कैसे? I mean to say this by this क्या? 0.086 by 1. नहीं नहीं. Time weighted is आपका ये जितना भी है 8.928 divided by 92.787. Okay. Okay. So the conclusion what I can draw here is I'm writing in words. So 4.136 years is the duration. Actually, a Macular's duration. So what does it mean? It means investor buys the bond at 92.787 rupees and expecting a yield of 12%. And the targeted cash flow is 150 rupees. He will need to hold the bond only for 4.136 years to achieve the targeted cash flows. That's it. ये point अभी आप याद रखिए. I'm going to prove you something else now. Okay, fine, clear. Shall we move forward? Okay. Yeah. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को 2 इयर्स के लिए लेके आएंगे. फाइन. एंड आई एम गोइंग टू प्रूव यू समथिंग कि ये कम क्यों हो रहा है. बिकॉज देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको बेसिक्स मालूम है कि आपको जो कूपन आएगा वो आप री इन्वेस्ट करोगे. री इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आपको कूपन का 10 रुपीज के ऊपर आपको 12% के हिसाब से हर साल इंटरेस्ट भी तो मिलेगा. तो जितना ज्यादा कैश फ्लो ग्रो होगा, आपका टारगेटेड अमाउंट उतना जल्दी आएगा कि उतना लेट आएगा? जल्दी. See, the money what you are getting is higher amounts. See, instead of thinking it in such a way कि मेरे को 10 रुपीज ही मिल रहा है, you think कि ये 10 रुपीज को आप री इन्वेस्ट कर रहे हो 12% के ऊपर, तो वो 10 रुपीज 10 पॉइंट या 11 रुपीज कुछ बनेगा. सॉरी, करेक्ट ना? 10 into 12% कितना होता है बॉस? 1.12 होता है. तो आपको ये इतना रुपए हर साल, और ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1.12 ये कंपाउंड होगा सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का कंपाउंडिंग है, फोर्थ ईयर में फोर्थ ईयर का कंपाउंडिंग है, फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर का कंपाउंडिंग है. ये ज्यादा ज्यादा होते होते क्या हो रहा है, यू आर रिसीविंग योर टारगेटेड कैश फ्लो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और एट ए हायर टाइम. आपको 5 इयर्स प्रॉमिस करा ना वो, लेकिन आपको पैसे कितने जल्दी आ रहे हैं? टेल मी. हेलो. हेलो, यस. आपको उसने कितना, कंपनी ने कितना टाइम प्रॉमिस किया? 5 years. Yes. आपको कितने जल्दी आ रहे पैसा? 4.136. क्यों आ रहा है ये? बिकॉज यू आर री इन्वेस्टिंग एंड getting returns on this 10 rupees coupon also. That's the reason why Yes. more cash is generated and less time you take to recover your targeted cash flow. That's it. So that point I'm going to prove you. Please understand. ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, आपको प्लीज अंडरस्टैंड करो. So now instead of dealing with 5-year cash flow, let us deal with 2-year cash flow. Okay. So what works for 2 years will work for 5 years or work for 30 years. Fine. So अब जैसे यहाँ पर आपका बॉन्ड है 10% का, ईयर 1 2, मैं पूरा लिख देता हूँ. इट्स a 2-year bond. 10% coupon is what they promised.
face value of the bond is like 1 lakh rupees, for example, and yield in the market is 10%. So what is the relationship you can get here? What is the relationship you're getting here? Same. Yeah, you are what you are paying, you are getting the same. The yield and these are same. So the bond is not sold at discount. The bond is not sold at premium. Okay. If the Yeah. coupon rate is equal to the yield, the bond is a par bond. That means not a discount, not a premium. Understood? Fine. Now, cash flow 10,000 पहले साल में आएगा, दूसरे साल में 1,10,000 आएगा आपको. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका 10% के ऊपर 0.09091 0.8264. Discounted cash flow 9091 90909 1 लाख. आपका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? Divide this with this and this with this. Time weighted average 0.09 and 1.82 1.91. So what's your duration? 1.91. 1.91. अब आप एक पॉइंट समझो इसमें. What does 1.91 says is, even though a 2-year bond, it's a 2-year bond, the investor need not wait for 2 years to get his expected cash flows. The investor need not wait for 2 years. Why? Because he wants how much? 1,20,000. Okay. Over a period of 2 years. And उसके लिए उसने कितना पे किया है? 1 lakh today. So if the investor has paid 1 lakh and he wants 1,20,000 in 2 years, he will be happy if he has generated a yield of 10%. He has achieved his targeted cash flow of 1,20,000, not in 2 years, but in 1.91 years. आप happy होंगे ना? जितना जल्दी आपका पैसा आ गया उतना अच्छा आपके लिए. Much before 2 years, he will be more happy investor, because 10% पे उसको 1.91 years में आ गया. अब वो कैसे समझो यहाँ पर. तो इसीलिए मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उतना रिस्क कम होगा आपको, उतना अच्छा होगा. सो मैकेनिक्स यहां पर ये है. 1 लाख 10% कितना मिलना है आपको? 10,000. सो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 कितना मिल जाएगा? 1,10,000. करेक्ट. अभी ये 1,10,000 is the amount of the first year, and see it's a compounded return. So this becomes the principal of the next year. Correct. सिंपल आपके स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़े ना. Yeah. तो आप ये क्या हुआ इसमें? आपका 1 लाख तो इन्वेस्ट हुआ ही हुआ है और 10,000 भी आपका इन्वेस्ट हुआ है. उस 10,000 के ऊपर आपको 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है और 1 लाख के ऊपर 10,000 का तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है आपको. सो इट हैज बिकम हाउ मच? 1,21,000. आपको चाहिए कितना? 1,10,000. सर आपको कितना 1 चाहिए? lakh, तो 1 lakh. आपका एक्सपेक्टेड टारगेटेड कैश फ्लो कितना फिक्स किया आप? Okay, 1,20,000. तो आपको 2 साल में कितना मिल रहा है एक्चुअली में कंपाउंड रिटर्न्स के वजह से? 21. आपको चाहिए कितना? 20. तो उसके लिए आपको 2 इयर्स वेट करने की जरूरत नहीं है. 2 इयर्स में तो आपको 1,21,000 मिलेगा. तो ये कितने साल में मिलेगा आपको? That's it. 1.91. That's it. अच्छा, इसको एक छोटा सिंपल वे में करना चाहते हो तो कर लो. 11,000 आपको जो है 12 मंथ्स में मिल रहा है. नेक्स्ट 12 मंथ्स आपको कितना चाहिए? 10,000. आपको 10,000 चाहिए कि 11,000 चाहिए सेकेंड ईयर में 1,20,000 करने के लिए? हेलो. Yeah. आपको 11 मिल रहा है ना? व्हाट यू वांट एक्चुअली?